Uttarakhand is the water repository of 8 perpetually flowing rivers. Water is still a problem in the hills of Uttarakhand. The problem of water scarcity has been addressed on the basis of community participation through the Uttarakhand Decentralized Watershed Development Project or Gramya. With the objectives of attaining sustained management of natural resources through the concept of watershed development, 40 Gram Panchayat under the Dhari and Okhalkanda blocks of Nainital division were selected in the Gramya project. To provide a more expansive form to the natural resource management activities in these Gram Panchayats under Gramya, SLEM sub-project is also being implemented. Hill areas are totally dependent on the rains for availability of water. Due to the ill effects of ecological imbalances, this rainwater takes away the invaluable soil and land through erosion. Therefore, rainwater harvesting, conservation, recharge and increased water use efficiency have been the priorities of the project. प्रोजेक्ट में मुख्य फोकस वाटर रिचार्ज पे था, जो कि ट्रेंचेस और अर्दन डग आउट पॉन्ड बनाकर जो है पूरा किया गया। वाटर रिचार्ज बढ़ने के बाद में जो है इरिगेशन टैंक बनाकर और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाकर जो है वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया गया। इसके बाद में वाटर यूज एफिशिएंसी और इरिगेशन पोटेंशियल को बढ़ाया गया। Check dams have been constructed in the streams and drainage course through the project. This has not only stopped the erosion of invaluable fertile soil by checking the gushing flow of water, but have also caused increased infiltration resulting in groundwater recharge. The vegetative cover in the area has increased due to the activities of the project, promoting afforestation and natural regeneration. In this way, the washing away of topsoil has been stopped, and by the reduction in the velocity of flowing rainwater, the level of groundwater has started to improve. Contour trenches dug in these hilly slopes have been successful, not only in checking the soil losses, but have also been proven to be successful means of rainwater harvesting in slopy areas. The dugout ponds constructed through the project, besides means of rainwater harvesting, have proven to be an excellent option for improving the groundwater level. तालाब वालों ने हमारे लिए काफ़ी अच्छा काम किया, जिसमें एक तालाब बनाया है। तालाब से हमें कई फ़ायदा मिला। एक तो हमारे जानवरों को भी यहाँ पानी पीने को मिलता है गर्मियों के दिनों में, और उसके नीचे हमने लेमन ग्रास और नेपियर ग्रास, जो हमारे नेपियर जो है गायों के काम भी आती है, और लेमन ग्रास हमारे कई आयुर्वेदिक दवाइयों के काम आती है। उसके नीचे नर्सरी को भी, हमारी जो नर्सरी बनी हुई है उसको भी काफ़ी नमी मिलती है। उससे नीचे हमारे कई नौले हैं जो हमारे गाँव के काम में आते हैं। हमारे 3-4 तोग इस टाइप के हैं जो अलग अलग हैं, उनके स्रोत जो है अलग अलग बने हुए हैं। उससे हमारे तालाब से उनको जो है कभी गर्मियों में भी पानी की दिक्कत नहीं होती। Rainwater collecting tanks or the rainwater harvesting tanks have been constructed by the project in this water scarce area. These water tanks have been immensely useful in collecting the rainwater for domestic chores. पहले तो पानी की बहुत दिक्कत थी, नीचे से लाते थे गधेरे से, और जब से डिग्गियाँ ये बनी हैं उस सब से हमको बहुत सुविधा है। सब पानी यहाँ इनमें बारिश का पानी डिग्गियों में भर लेते हैं, उससे बर्तन धोने के और गाय बच्चों को
पिलाने के लिए और नहाने धोने कपड़े धोने के लिए सब काम आ जाता है पानी। The result of the project endeavors towards source rejuvenation and groundwater treatment was that now the water sources in the village have water throughout the year. One such source is supplying water through a pipeline to the government inter-college Katna. For these school children who used to face problems earlier, now have round-the-clock access to drinking water. पानी की सुविधाएं नहीं थी यहाँ, गधेरों से नालों से पानी लाना पड़ता था, टाइम वेस्ट हुआ करता था। अब जलागम के द्वारा ये सुविधा हुई कि हमारे स्कूल में ही पानी आ चुका है। अब सारे बच्चे यहीं से पानी पीते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है पानी की उससे। पहले क्या होता था, हमारे स्कूल में जब पानी नहीं होता था, हम ही लोगों को बड़ी दिक्कतें होती थी। यहाँ पर आज जो है टॉयलेट्स के अंदर भी हमारे वहाँ नल लगे हुए हैं, उनमें भी लगातार पानी आता है। तो टॉयलेट्स में जैसे लड़कियाँ हैं, उनको जंगलों में जाना पड़ता था, दिक्कत होती थी। हमको भी बड़ा फील होता था पहले कि कई समस्याएं आती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब हमने यहाँ भोजन पकाने के लिए भोजन माताओं को नियुक्त किया था, तो वो भी पानी बड़ी दूर दूर से लाती थी। उनको बड़ी परेशानी होती थी, कंटरों में भर के सर में लाती थी, आधा भीग जाती थी। वो कई बार वो भीगने की वजह से बीमार पड़ गई, लेकिन आज उनको बिल्कुल उनके मुँह के आगे पानी के नल लगाए, पानी बह रहा है उसमें फर्स्ट क्लास। जब चाहो तब टोटी को खोलो और पानी ले लो उसमें से बढ़िया करके। For the fields that were earlier solely dependent on the rains for irrigation are provided assured irrigation through irrigation tanks. So now these villagers have shifted to cash crop cultivation. Water users groups formed in the upper reaches of the project area are now collecting water in irrigation tanks through water lifting pump under lift scheme. Thus, rain-fed area is now having access to assured irrigation. जब हमारा ग्राम्य आई तो ग्राम्य के माध्यम से हम लोगों ने एक समूह बनाया, फिर हमने एक जगह हमको ग्राम्य ने फंडिंग करवाई। तो फंडिंग करवाई, हमको 50,000 फंडिंग करी। फंडिंग से हमने एक मोटर लाए। फिर मोटर लाने के बाद हमने मोटर नीचे जो हमने मोटर लगाई, फिर उसके बाद पानी को ऊपर लिफ्ट किया। मतलब पूरे समूह में 5 टैंक हमारे पास भी में। तो हमारा इसमें ऐसा था कि पहले हम लोग जब हमारा पानी नहीं था, उस वक्त हम आधा आलू और आधा खेती गेहूँ बोते थे, बाकी घास छोड़ देते थे क्योंकि हम बारिश के भरोसे रहते थे। अभी जब ये ग्राम्य जब आई तो तब से हम लोग जो है हर खेती, जब हम टमाटर नहीं लगाते थे, मटर नहीं लगाते थे, तो अभी मटर भी लगाए। गर्मी के मटर भी बो रहे हैं इस बार। LDPE tanks or low density polyethylene tanks are proving to be a useful option for water harvesting. Gravity sprinkler systems provided by the project for irrigation are not less than a boon for these farmers. The Gram Panchayat Sela Lake is witness to the excellent results of the water conservation and recharge activities of the project. Two earthen dugout ponds having 9 lakh litres capacity have been dug in the Ratoda hamlet of the village. On one hand, where the contour trenches are conserving moisture, the diversion drains, on the other, are diverting this water into the ponds, which would otherwise go waste. Proper arrangements have been made for the safe disposal of overflow when the water rises above the critical level of the pond. Soil and moisture conservation measures are being undertaken in lower reaches of pond and in the drainage course by way of constructing vegetative and stone check dams. It's the result of these conservation measures that now all the existing water sources in the Gram Panchayat are having availability of water throughout the year.
These works of water augmentation and recharge were appreciated at national level, and Gram Panchayat Sela Lake was awarded the National Groundwater Augmentation Award 2010 for the North Zone under the Gram Panchayat category. This award included a cheque of ₹1 lakh, a citation and a silver plaque. Gram Panchayat Sela Lake Block and Tehsil Dhari, Uttarakhand is the next to receive the award as it implemented various artificial recharge interventions including staggered contour trenches, plantations for water recharge and water harvesting to overcome water scarcity in the area under the Uttarakhand Decentralized Watershed Development Project. We have Mr. Shiv Kumar Kalyan, Deputy Project Director of the project, Uttarakhand Decentralized Watershed Development Project, receiving the award. The cash received with the award has been utilized in quenching the thirst of these children studying in the primary school of the Gram Panchayat. परियोजना से ऊपर गांव के ऊपर तालाब बनवाया, ऐसे हमारे धारे नौले में पानी के स्रोत बढ़ गए थे, हमें उन्हें उससे फ़ायदा हुआ, हमें इसे अच्छा काम हुआ हमारी ग्राम पंचायत में, हमें ये पुरस्कार मिला, 1.5 लाख का पुरस्कार मिला और इसे हमने वही पैसों से हमने यहाँ ये स्कूल में ये बच्चों के लिए ये पानी की ये टैंक बनवाया। Participation of the local people has been instrumental in achieving the objectives of the project. After all, who else can better understand the value of water than these hill inhabitants?